हाय एवरीवन। आज डे 7 है क्लीनिंग का और वैसे मैं हर दिन क्लीन नहीं करती बट जब टाइम मिलता है तब करती हूँ। और मैं आपको क्लीन वर्जन दिखाना चाहती हूँ जो फ्लावर सेक्शन का, बिकॉज अभी सॉर्ट आउट करके क्लीनिंग करके सब मैंने नीटली रख दिया। So this is where I have kept all of my flowers, and as you can see मैंने फिर से वही container boxes and other jars and old boxes use किए हैं, and this is another box full of flowers which I have completely sorted out nicely. So further in the video you will see that ये box कितना messy था और इसको मैंने कैसे सॉर्ट आउट किया। टू सॉर्ट आउट फ्लावर्स मैं 3 थिंग्स कंसिडर करती हूँ। फर्स्ट, द साइज़ ऑफ द फ्लावर, द कलर्स एंड द मटेरियल ऑफ द फ्लावर। मैं इन बेसिस पे इन फ्लावर्स को सेग्रीगेट करती हूँ। सॉर्टिंग आउट फ्लावर्स कैन बी अ वेरी टीडियस जॉब, सो आपको पेशेंस रख के ही करना पड़ेगा बिकॉज उसमें बहुत तरह के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। नाउ एज यू कैन सी आई एम ऑलमोस्ट डन विद क्लीनिंग ऑफ दिस बॉक्स एंड नाउ आई एम गोना कीप देम सेपरेटली इन डिफरेंट बॉक्सेस विच आर अगेन आई एम रिसाइकलिंग द बॉक्सेस। So ये सारा लॉट है फ्लावर्स का, एंड एज यू हैव सीन देयर वाज अ बिग बॉक्स ऑल्सो फुल ऑफ फ्लावर्स इन पैकेट्स। नाउ लेट मी शो यू वन बाय वन कि इन जार्स में, इन बॉक्सेस में कौन से फ्लावर्स हैं, कैसे फ्लावर्स हैं। Now this is a glass jar, and since the size of the jar is big, so I have stocked big flowers in this. There are different kinds of flowers: felt, foam, paper flower, handmade flower, ready-made flower. So all are different, but the only thing is size of the flowers are big, so I have put them all together in one jar. So this another box which I am recycling, और इसके अंदर मैंने सारे felt flowers stock किए हैं। इसमें से कुछ हैंडमेड फ्लावर्स हैं और कुछ रेडीमेड हैं। नाउ फॉर एग्जांपल दिस वाइट फ्लावर इज़ अ हैंडमेड फ्लावर एंड दिस ऑरेंज वन इज़ अ रेडीमेड फ्लावर। नाउ सिंस ये जो जार है ये लॉन्ग था तो इसमें एक ही टाइप के फ्लावर्स स्टॉक अप किए हैं। Same goes for this. These are all paper flower. And this one also. It's medium size flower and they are paper flowers only. Okay, इस जार में सारे छोटे साइज़ के फ्लावर्स हैं and it's all mixed different colors. Whereas this one are felt and ribbon flowers, again small size flowers in one jar. और ये है मिक्स वुडन फ्लावर्स का या रेजिन फ्लावर्स, मोस्टली रेजिन फ्लावर है इस कंटेनर में। Now these flowers are ready-made flowers and I have not used them till now. They are from Prima Marketing and they're so pretty that I use it mostly for photography. Now in this box I have stocked some of the Prima flowers and as well as handmade flowers. These golden flowers are handmade flowers. So let's come to the last box, and in this box you will see extremely small flowers, and these are store-bought flower from Daiso, and they are resin flowers actually. And these flowers can be used for miniature projects or really tiny paper projects or mixed media. Now in this box again I have punched flowers. Well, I have not stick them together. I had some extra punched flowers, so I've just put them together. So in case if I need it, I will be making them quickly, layer them quickly and using them.
And again, it's a handmade flower, and this is how after layering it looks. तो इस बॉक्स में मैंने वाइट फ्लावर्स बेसिकली या क्रीम पेस्टल फ्लावर्स बेसिकली वाइट क्रीम फ्लावर्स स्टॉक अप किए हैं। तो मेरे पास काफ़ी वाइट फ्लावर्स थे, तो मैंने सोचा इनको एक ही बॉक्स में डाला जाए तो अच्छा है। अलॉन्ग विद दैट सम knickknacks are there, some like you can see clay flowers are there, paper flower is there, then plastic flower is there. And let's come to these big boxes. Now in this big box, again some punched flowers, and they are all mixed in the sense some are foam, paper, then basically foam and paper only. And in this box I have stocked some pattern paper flowers which has been cut out from a pattern paper. And in this last box I have again handmade flowers. All of them are handmade. So these are all made with pattern paper, punched, die cut, layered, everything together. So this was the whole collection of flowers I have along with that box full of packed flowers. So I hope you enjoyed the video. Stay tuned for next.